Question number 5 of the worksheet. A lorry of mass 16,000 kg climbs from the bottom to the top of the straight hill of length 1000 meter at a constant speed 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायग्राम बनाएंगे पहले हम। mass is 16,000 kg. This is the bottom and this is the top. Constant speed is 10 meters per second. Constant speed means acceleration is 0. The top of the hill is 20 meters above the level of the bottom of the hill. So this is 20 meters. And length is, this length is 1000 meters. Length of hill is 1000 meters. Mass is 16,000 kg. The driving force of the lorry is constant and equal to 5000 न्यूटन। ड्राइविंग फोर्स जो है हमारे पास वो 5000 न्यूटन है। तो हमने फाइंड करना है गेन। फर्स्ट पार्ट, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लॉरी। वो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा mgh। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, mgh। m is 16,000, g is 10 and height is 20। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.2 10⁻⁶ जूल। सेकंड पार्ट है द वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 5000 न्यूटन है एंड लेंथ ऑफ द हिल इज 1000 मीटर। तो ये वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होगा F इंटू डी। 5000 इंटू 1000, this becomes 5 into 10⁻⁶ joule. Next, third part, the work done against the force resisting the motion of the lorry. The work done against the force resisting the motion of the lorry, ये हमने work against friction फाइंड करना है। इसके लिए ये फार्मूला हम यूज करेंगे। Work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy। क्योंकि यहाँ पे वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया तो ये हम ये फार्मूला वर्क एनर्जी रिलेशन कहते हैं इसको, ये यूज़ करेंगे। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमने फाइंड कर लिया 5 इंटू 10⁻⁶। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। ये देखें कि स्पीड कांस्टेंट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ चेंज होगी। तो सो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी वो जस्ट वो mgh आ जाएगा। वो हमने पहले ही फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया हुआ है mgh। तो वो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 3.2 इंटू 10⁻⁶। तो यहाँ से वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा। इनको हम माइनस कर देंगे तो दिस बिकम्स 1.8 इंटू 10⁻⁶
6 joule. Fourth part of this question is find the work done by the driving force of the lorry while the lorry travels from the top of the hill to P. इसके लिए on reaching the top of the hill, the lorry continues along a straight horizontal road against a constant resistance of 1500 न्यूटन। ये डायग्राम में हम बनाते हैं यहाँ पे टॉप ऑफ द हिल, ये टॉप ऑफ द हिल है, यहाँ से फिर वो हॉरिजेंटली मूव करता है। यहाँ पे हमारे पास स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। और ये लेंथ जो है ये हमारे पास है 2000 मीटर। दिस इज 2000 मीटर। दिस पॉइंट इज P। तो यहाँ पे स्पीड जो P पे स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे है 1500। रजिस्टर फोर्स जो है वो 1500 है, अपोज करेगी इसकी मोशन को। 1500। तो अब हमने वर्क फाइंड करना, फाइंड द वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द लॉरी व्हाइल द लॉरी ट्रेवल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल टू P। यहाँ से टॉप ऑफ द हिल से पॉइंट P तक हमने वर्क फाइंड करना है, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। अभी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, इसके लिए भी वो फार्मूला हम ये यूज करेंगे। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमने फाइंड करना है। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो F इंटू डी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1500 है। डी इज डिस्टेंस इज 2000 मीटर प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं है, वो हॉरिजेंटली जा रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। तो वो 1/2 m v स्केयर माइनस u स्केयर। v स्केयर इज P पॉइंट पे 25 है स्पीड, 25 स्केयर माइनस 10 स्केयर। अब इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे दिस बिकम 3, ये 6 जीरोज है, प्लस 16,002 से कैंसिल होकर वो 8000 रह जाएगा। 625 माइनस 100, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.2 इंटू 10 पावर 6 जूल। दिस इज आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। A small block is pulled along a rough horizontal floor at a constant speed 1.5 meter per second by a constant force of magnitude 13 Newton, acting at an angle theta degree upward from the horizontal.
This is a small block. This is a force acting, 30 Newton. The speed is 1.5 meter per second. This is a constant speed. This force 30 Newton making an angle theta degree. We will resolve this 30 Newton force. There will be two components, a horizontal component, but this is the vertical component, or this is 30 sine theta, and this is 30 cos theta. Given that work done by the force is in 20-second time, given a time is 20 seconds, work done by the driving force is given, that is work done by driving force is given, that is 720. Now we will use this formula of work. W is equal to F cos theta into D. F cos थीटा हमारे पास 30 cos थीटा है, ये आप डायग्राम में देखें, 30 cos theta into D, and now we will find D. Since the speed is constant, we can find distance by using this formula. S is equal to V into T. Distance is V is 1.5 and T is 20, so distance is 30 meter. अब यहाँ पे हमारे पास D है, वो डिस्टेंस है, so this becomes 30 cos theta into D. D is 30, and work done is given, that is 720. From here we can find the value of theta. Cos theta will be equal to 720 over 900. Here theta is equal to cos inverse this, we will get 36.9 degrees. So next is question number 7. A car of mass 1200 kg travels along a horizontal straight road. Diagram: horizontal straight road. This is a car of mass 1200. M is mass is 1200 kg. The power provided by the car's engine is constant equal to 20 kW. तो पावर हमारे पास आएगी 20,000 वाट. And the resistance to the car's motion is constant equal to 500 न्यूटन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 500 न्यूटन है. The car passes through point A and B with speed 10 and 25. Suppose this is point A and this is point B. A पे स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, B पे स्पीड 25 मीटर पर सेकंड है. Now we will use Newton's second law of motion. Driving force. This is driving force.
This is this will be P over V. We will use this formula P is equal to F into V. ये F जो है ड्राइविंग फोर्स होती है, ड्राइविंग फोर्स आ जाएगी P over V. So this is P over V. Force of friction is 500 Newton. तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टेंस resistive force is equal to ma Newton second law. P is 20,000 over V is 10 minus 500 friction. M is 1200 A. From here we can find the value of A, which will be equal to 1.25 meter per second square. This is the answer. The second part is this: by considering the work and energy, find the distance AB, work energy relation. Again, we will use that formula. This is the work energy relation. Work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. So first of all, we will find work done by driving force. We have this formula of power, work over time. From here, work will be power into time. Power is 20,000. Time is given 30.5. So this will be equal to 61,000. Now we will put these values in this formula. Work done by driving force is 61,000. Putting the values in the above formula 61. This is not 61,000. There are 4 zeros. Is equal to work against friction F into D. F is 500 and distance is AB. AB हमने यहाँ से फाइंड करना है. प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है. हॉरिजेंटली मूवमेंट है. हॉरिजेंटल मूवमेंट तो 1/2 m v स्केयर माइनस u स्केयर. तो वो 625 minus 100. This becomes 6140 500 AB plus 315 3 zeros. From here we can find AB. AB will be 590 meters. This is the answer. Now question number 8. A block of mass 50 kg is pulled up a straight hill and passes through point A and B with speed 7 and 3 meter per second respectively. The distance AB is 200 and B is 15 meter higher than A. For the motion of the block from A to B, find the loss in kinetic energy of the block.
स्ट्रेट हिल, जिसकी डायग्राम बनाते हैं। mass is mass of the block is, this is part first. Mass of the block is 50 kg. This is the diagram. This point is point A. This point is point B. A पे speed है हमारे पास 7 meter per second. At B the speed is 3 meter per second. 15 meter higher than A. B is 15 meter higher than A. तो ये हमारे पास 15 मीटर होगा। डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। So first we will find loss in kinetic energy of the block. Loss in kinetic energy will be 1/2 m v square minus u square. तो 1/2 m हमारे पास है 50, v square v is 3 square minus u is 7 square. So this will be equal to -1000 joule. इसको हम माइनस जो है दिस shows the loss, तो आंसर is 1000 joule. The second part is gain in potential energy of the block. Potential energy में gain in, this is second part, gain in PE potential energy वो हमारे पास mgh है. m is 50 g10 and h is 15. So this will be 7500 joule. This is the answer. The third part of this question is find the work done by the pulling force acting on the block. Work done by the pulling force acting on the block. Again we will use this formula. Work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. तो ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास आ जाएगा F इंटू डी 7.5 इंटू डी, डिस्टेंस इज 200 मीटर। वो डायग्राम में देखें, देख रहे हैं आप 200 है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमारे पास यहाँ पे अपोजिट मूवमेंट के अपोजिट एक्ट करेगी। F इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन। 7 F इंटू डी डब्ल्यू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी।
तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो है वो हमने फाइंड करनी है। ये देखें मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे फाइंड करेंगे। ये मैकेनिकल एनर्जी एट बी, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh 50 इंटू 10 इंटू h इज 15 प्लस 1/2 mv स्केयर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। एम वी स्केयर इज 9, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 7725 आ जाता है। ये मैकेनिकल एनर्जी एट बी थी, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एट ए भी फाइंड करेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास 0 है क्योंकि ये बॉटम पे है, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 mv स्केयर, वी इज 7 उसका स्केयर 49 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1225 आ जाएगा। तो अब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हमने यहाँ पे लिखना है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा फाइनल हमारे पास है 7725 माइनस 1225। तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 6500 सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन जो है वो 8000 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 जो है उसके लिए स्टेटमेंट आप ऊपर देख रहे हैं। द पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 45 न्यूटन एंड एक्ट एट एन एंगल अल्फा अपवर्ड फ्रॉम द हिल। अब उसी फिगर पे मैं फोर्स शो कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देखें। ये फोर्स F 45 न्यूटन जो है वो यूं एक्ट कर रही है, और ये एंगल अल्फा है। दिस इज 45। इसको रिजॉल्व करेंगे हम, एक कंपोनेंट इसका ये है और दूसरा ये है। 45 ये कंपोनेंट आएगा 45 cos अल्फा, और दिस इज 45 sin अल्फा। अब हम यहाँ पे फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे वेट का कंपोनेंट भी जो है वो हमने लेना है। वेट का कंपोनेंट मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये वेट का कंपोनेंट भी होगा, दिस इज वेट, ये कंपोनेंट है। और अब हमने ये एंगल भी फाइंड करना है, ये एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। वही एंगल ये होगा, दिस कंपोनेंट इज mg sin अल्फा, mg sin थीटा, ये थीटा हम फाइंड करते हैं। ये mg sin थीटा, तो ये थीटा फाइंड करने के लिए हम पहले ये डायग्राम में देख रहे हैं आप, वो राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, 15 उसकी हाइट है और 200 लेंथ है, तो साइन यूज करके ये थीटा फाइंड कर लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 15 ओवर 200
From here, theta is equal to sine inverse 15 over 200. That is, theta is equal to 4.3 degree. Now we will use in Newton second law of motion. तो ये देखिए 40 फोर्स का वो कंपोनेंट जो है अलोंग द प्लेन 45 cos अल्फा इक्वेशन ऑफ मोशन 45 cos अल्फा माइनस वेट का कंपोनेंट एम जी साइन थीटा इज 4.3 डिग्री minus friction is equal to, this is the force, net force is equal to ma. m is 50 and a अभी हम फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करना है। तो वो इनिशियल और फाइनल स्पीड दी हुई है, ये देखें वी, ये हम यूज़ कर लेंगे ए फाइंड करने के लिए। वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से वे फाइनल स्पीड इज 3 है, उसका स्केयर 9 आ जाएगा, इनिशियल स्पीड इज 7, उसका स्केयर 49। 2a हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस हमारे पास अलोंग द प्लेन 200 है, तो यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा -40/400, दैट इज -0.1 मीटर पर सेकंड स्केयर। ये एक्सेलरेशन आ गया है। अब ये एक्सेलरेशन जो है हम ऊपर इक्वेशन में पुट करते हैं, ये वो टोटल कैलकुलेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू -0.1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 cos अल्फा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं 45 cos अल्फा माइनस, उसको कैलकुलेट यूज योर कैलकुलेटर टू फाइंड द 50 into 10 into sine 4.3 minus 7.5, that is 37.49 minus 7.5 इज इक्वल टू एम हमारा 50 है और एक्सेलेरेशन जो है वो -0.1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। यहाँ से हम अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कॉज अल्फ़ा जो है वो हमारे पास आ जाएगा 40/45। फ्रॉम हेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू cos inverse 40/45, that is alpha is equal to 27.3 degree. So this is the final answer. Now next question number 9. क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर बनी हुई है। A box of mass 8 kg is pulled at constant speed up a straight path which is inclined 15 degree to the horizontal. The pulling force is constant magnitude of magnitude 30 Newton and acts upward at an angle 10 degree. हॉरिजेंटल के साथ वो बेस के साथ एंगल 15 डिग्री है और वो फोर्स 30 न्यूटन 10 डिग्री बना रही है। The box passes through point A and B where AB is 20 meters and B is above the level of A. For the motion from A to B, find the work done by the pulling force. यहाँ पे हम दोबारा से मैं डायग्राम बनाता हूँ। Part first of this question, mass of the box is 8 kg. Diagram is this.
This angle is 15 degree. This point is A and this point is B. यहाँ पे इस पे बॉक्स पे ये फोर्स लग रही है, फोर्स इज 30 न्यूटन। अब इसको हम पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। दो कंपोनेंट आएंगे इसके, एक अलोंग द प्लेन, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये देखें, अलोंग द प्लेन, this is perpendicular to the plane, this angle is 10 degree, so this component is, अपने ए से बी तक का प्लेन के अलोंग वो डिस्टेंस भी दिया हुआ है, वो है हमारे पास 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है अलोंग द प्लेन, दैट इज 20 मीटर। We have to find in the first part work done by the pulling force. Work done by pulling force 30 cos 10 degree, ये कंपोनेंट यूज होगा 30 cos 10 डिग्री। तो यहाँ से हम वेट फाइंड कर सकते हैं, वर्क डन फाइंड कर सकते हैं पुलिंग फोर्स का। W इज इक्वल टू 30 cos 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 20 वो डिस्टेंस है, F cos थीटा इंटू डी ये फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो 591 जूल आ जाता है। ये हमारा आंसर है। Now for part second, the gain in potential energy of the box. Potential energy का फार्मूला, gain in potential energy mgh, m is 8 और g 10 है और हाइट हमारे पास है, हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। हाइट इधर फाइंड कर लेते हैं। उस डायग्राम में देखें, ये हमें गिवन है, ये डिस्टेंस 20 मीटर गिवन है। तो ये देखें यहाँ पे ये एंगल, ये हाइट दोनों की दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ए और बी, उनकी हाइट जो है वो ये होगी, और वो ए से बी का वो अलोंग द प्लेन वो डिस्टेंस 20 मीटर है। तो सो हम ये एंगल भी हमें पता है 15 डिग्री ही होगा, क्योंकि जो बेस के साथ एंगल है वही ये होगा। तो अब हम यहाँ से हाइट फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर वो साइन रेशो लगाते हैं, एच ओवर 20 perpendicular over hypotenuse is equal to sine 15. From here h will be 20 sine 15 degree। h हमारे पास आ जाएगा 5.176 मीटर। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, हाइट इज 5.176। तो we will get potential energy, gain in potential energy 414 joule। This is the answer of this part. Next part, third of this question is the work done against the resistance to the motion of the box। अब work done against resistance पूछा, तो फिर हम वो फार्मूला वर्क एनर्जी रिलेशन यूज करेंगे। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स
हमने फाइंड कर लिया ऊपर फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 591. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन वी हैव टू फाइंड, प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी में चेंज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हुए वो है 414. 414. तो ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज जो है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज हुआ है वो होगा. तो वो हमारे पास 414 है, ऊपर वाले पार्ट में हमने फाइंड किया है. तो यहाँ से वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो आ जाएगा 591 माइनस 414, दैट इज इक्वल टू 177 जूल. Now next is question number 10, part first. The cyclist travels along a straight road working at a constant rate of 420 watt. This is power given 420 watt. Total mass of the cyclist and her cycle is 75. So mass is 75 kg. Ignoring any resistance to the motion, find the acceleration of the cyclist at an instant when she is traveling at 5 meter per second. Speed is given 5 मीटर पर सेकेंड. अब हम न्यूटन साइकिल लॉ यूज करेंगे. यहाँ पे ये डायग्राम ये हो सकती है इसकी. ड्राइविंग फोर्स विल बी P, क्योंकि पावर गिवन है, P over V. दिस इज द ड्राइविंग फोर्स. नो फ्रिक्शन इन दिस पार्ट. तो न्यूटन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, P over V, P is 420, V is 5 is equal to ma. M is 75, यहाँ A, M is 75 ma. तो यहाँ से एक्सेलेरेशन हमारे पास आ जाएगा 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Second part of this question is given instead that the road is inclined at 1.5 degree to the horizontal and the cyclist is traveling up the slope. Now अब हमने एक्सेलेरेशन फाइंड करना है और दोबारा से इसकी डायग्राम बनाएंगे. Now the road is inclined at 1.5 degree to the horizontal. Second part, and this angle is 1.5 degree. This is the cyclist. Driving force P over V. No weight acting downward, mg. और इसके कंपोनेंट्स होंगे, दिस इज वेट, और इसके कंपोनेंट्स होंगे along the plane and perpendicular to the plane. ये एंगल 1.5 होता है, ये mg.
साइन 1.5 डिग्री और दिस इज द रिएक्शन। तो हमें दूसरे कंपोनेंट की इसकी ज़रूरत नहीं है, mg cos 1.5 डिग्री, we don't need it. We will use only the components mg sin 1.5 डिग्री। इक्वेशन हमारे पास बनेगी यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। 420 p over b mean 420 पावर ओवर स्पीड इज 5 माइनस स्पीड का कंपोनेंट mg, वे m हमारे पास है 75 kg। तो 75 यहाँ पे लिख लेते हैं। सेवेंटी फाइव जी, तो ये आ जाएगा, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट होगा 75 जी साइन 1.5 डिग्री और ये कंपोनेंट होगा 75 जी cos 1.5 डिग्री। तो 420/5 माइनस 75 एम जी साइन, एम हमारा 75 है, एम जी साइन 1.5 डिग्री इज इक्वल टू एम ए, एम ए 75 एंड ए, यहाँ से ए हमारा फाइंड हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए जो है 0.858 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस।